Good evening student, we have started with a new chapter, that is transportation in plant. Under transportation we are starting with the first heading, that is what type of movement actually taking place during the process of transportation. So under this we are having two types of movement, passive movement and active movement of the substances. So here in this video we will start with the passive movement, under which we are studying diffusion. So let's start with our video lecture. So in transportation of plant, we are having two types of movements to transport the substances. One is passive movement and second is active movement. We have already discussed this topic in the chapter cell. If you want a detailed explanation of this particular topic, that is passive and active movement, so please go and see the lecture of active and passive transport in the chapter cell unit of life. Here we will quickly revise this process. So passive movement is a movement which do not require energy expenditure. Okay, while the active movement required energy in the form of ATP. So a movement which get achieved with the expenditure of energy in the form of ATP is actually called as active movement, and a movement which is taking place without expenditure of energy in the form of ATP is actually called as passive movement. So in passive movement we don't have to spend or expend the energy in the form of ATP. This process will take place from higher concentration to lower concentration. Always the movement will take place along the concentration gradient. So that means the movement will take place always from higher concentration. जहाँ भी substance ज़्यादा quantity में present है वहाँ से वो substance transport होंगे, जहाँ भी वो substances कम quantity में present है वहाँ तक. This movement is a slower movement and it will takes place only up to equilibrium. So ये मूवमेंट स्लो होगी और ये तब तक ही होते रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता तब तक. Compared to the active transport, in active transport the substance will get transported from lower concentration to higher concentration. That means it is against the concentration gradient. जहाँ भी वो substances कम है वहाँ से जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ पे उनका ट्रांसपोर्ट होगा. So it is going against the flow, so it will happen against concentration gradient. Gradient के opposite direction में ये flow होगा. As we are spending energy, so this process is faster and it will actually starts from equilibrium. Okay, this process will ends at equilibrium and this process will actually starts from equilibrium, and it can happen beyond the equilibrium up till the last molecule which will get absorbed. So it will go on beyond equilibrium up to the last molecule which is to be absorbed. So in case of passive transport we are taking three examples. There are three processes. First is diffusion, second is facilitated diffusion, and third is osmosis. In this we are firstly starting with diffusion. Okay, so while speaking about diffusion
is a passive process in which we always consider the movement of solute particles. So diffusion is always a movement of solute particle along the concentration gradient. That means from higher concentration to lower concentration, and it will takes place up till equilibrium. So diffusion is the movement of solute particle from higher concentration to lower concentration up till equilibrium. Here there is most important thing. Presence of semi-permeable membrane is not essential for diffusion to takes place. So a semi-permeable membrane can be present or absent for diffusion to takes place. Clear for this thing? And the molecules of solute particle will always move in random fashion. So there will be no fixed direction of molecule. The molecule will keep on moving up till they will get evenly distributed in the solution. So they will keep on moving up till they reach the even distribution inside the solution. Let's say for example, if we are considering a salt solution, then this is a beaker in which we are use water as a solvent, and we are putting the salt in this solution. So when we put the salt molecules at first they are in higher concentration in this region. From this region they will start moving in random direction, okay, and they will get evenly distributed in the solution. So they will move from higher concentration to a region where there will be a lower concentration, and from here they will now disappear as they got evenly distributed in the solution. So there will be a random movement of molecule while diffusion process is taking place. Okay, therefore this thing. Now the question is, which substance can get diffused? Okay, the diffusion can takes place of all the three substances, that is liquid, gases and solid. And these three type of solute molecule can move in all the three medium. That means a liquid solute can move in liquid, it can move in gaseous medium, or it can move in solid medium. And similarly the gas can move in all the three medium, and solid can also move in all the three medium. But here the diffusion of solid molecules is easy, but a diffusion in the solid is difficult. यानी solid molecule का diffusion होना ये comparatively easy है, लेकिन solid में diffusion होना ये थोड़ा सा difficult है, because there is a higher density of solid molecule. तो density ज़्यादा होने के वजह से उसमें substances diffuse हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. इसीलिए diffusion of solid is rather possible, but diffusion in the solid is rather difficult. So do remember this point. So these are the types of diffusion which can takes place inside the plant. Okay, then now we want to see what factors will actually affect the process of diffusion. So the factors will affect the process of diffusion are, number one, so these are the factors which affect the process of diffusion. These factors are, number one, temperature,
temperature is directly proportionate to the process of diffusion. More the temperature, more is the process of diffusion. We can take the example of cooking process. While we are cooking the food, we heat the food, okay, and due to that heat, the heat energy will get converted into kinetic energy of the solute particle, and that's why we can smell the food from longer distance while the cooking process is going on, okay. But once the food is colder, we can hardly able to smell that food, okay, from a longer distance. But while the cooking process is going on, we can smell the food from longer distance. So the temperature is directly proportionate to the process of diffusion. So it is directly proportionate to process of diffusion. Then the next factor is diffusion is inversely proportionate to the root of density. This particular thing is called as Graham's rule. More the density of substance, less will be the diffusion of that particular substance. So the next factors which affect the process of diffusion is density, and it is inversely proportionate. Number 3 is concentration of substance. More the concentration of substance, faster will be the process of diffusion. So concentration of substance is directly proportionate to the process of diffusion. The next factor which affect the process of diffusion is distance. Distance is inversely proportionate to the process of diffusion. More is the distance, less will be the diffusion. We can take the example of perfume bottle here. If we spray the perfume here in this room, so concentration of perfume is more in this particular room. You can smell the perfume in this room, but we cannot smell the perfume in another room, okay. So more is the distance, less will be the diffusion of particles. So distance is inversely proportionate to diffusion. The next factor which affects the process of diffusion is permeability of membrane. More the membrane is permeable for the substance, more will be the process of diffusion. So permeability of membrane is directly proportionate to the process of diffusion. जितनी ज़्यादा membrane permeable रहेगी किसी भी substance के लिए, उतनी ज़्यादा process of diffusion fast होगी उस particular substance के लिए. उसके बाद का जो फैक्टर है जो diffusion को affect करेगा वो है solubility of substance. If we are speaking about the diffusion across a semi-permeable membrane, then the lipid soluble substances will diffuse at a faster rate compared to the water soluble substances. अगर हम डिफ्यूजन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस रहेंगे वो ज़्यादा फास्ट तरीके से डिफ्यूज होंगे कंपेयर टू द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस. सो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस will have more permeability compared to a gas soluble substances. Next factor is size of solute particles. This factor is also inversely proportionate to the process of diffusion. जितने ज़्यादा solute particle की size बड़ी रहेगी उतनी ज़्यादा diffusion की process slow होगी. Okay, so these are all the factors which will affect the process of diffusion. So just to summarize, we have started with a new chapter, that is transportation in plant. In transportation of plant, we have started with passive transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल है डिफ्यूजन का. सो हमने कहा कि डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस. यहाँ हम ओनली सोल्यूट पार्टिकल के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं. मूवमेंट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है और मूवमेंट चलती रहती है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता तब तक. इक्विलिब्रियम अचीव होना यानी
पार्टिकल्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना सॉल्यूशन के अंदर। ओके, ये जो भी डिफ्यूजन की प्रोसेस है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो भी सकती है, यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो भी सकती है, या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अब्सेंट भी हो सकती है। दैट मीन्स presence of semi-permeable membrane is not essential for diffusion to takes place। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ऑस्मोसिस के लिए। इन ऑस्मोसिस विल रिक्वायर्ड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस विल ऑलवेज हैपन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट, जो भी मूवमेंट होगी सोल्यूट पार्टिकल्स की वो हमेशा रैंडम फैशन में होगी। देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन फॉर द पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स टू मूव। क्लियर? देन कौन कौन से सब्सटेंस का डिफ्यूजन हो सकता है? तो तीनों सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैसेस का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है, और तीनों सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन तीनों मीडियम्स में हो सकता है। दैट मीन्स लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, और इट कैन डिफ्यूज इन गैसेस, और इट कैन डिफ्यूज इन सॉलिड। बट यहाँ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सॉलिड का डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, देन वी हैव कंसिडर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसमें हमने सबसे पहला फैक्टर लिया टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन की प्रोसेस फास्ट होगी। हमने यहाँ पे कुकिंग का एग्जाम्पल लिया कि जब हम खाना बनाते हैं तो गर्म खाना हम दूर से सूंघ सकते हैं, लेकिन जब वही खाना ठंडा हो जाता है तो हमें उसकी खुशबू पास से लेनी पड़ती है। सो द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज डेंसिटी। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी सोल्यूट पार्टिकल की उतना डिफ्यूजन कम होगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक सब्सटेंस जितना ज़्यादा एक जगह पे होगा उतनी ही फास्ट वो वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा दूर तक डिफ्यूजन होना होगा उतनी ही प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ओके, सो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। Permeability of membrane is very important. Whenever the diffusion will takes place across the semi-permeable membrane, then more permeable the membrane, more will be the diffusion. ये directly proportionate है diffusion से। उसके बाद आता है solubility of substance। जब भी semi-permeable membrane के अक्रॉस डिफ्यूजन होगा तो जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे कंपेयर टू अ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। बिकॉज हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी है लिपिड बाइलेयर से, और वो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस को ज़्यादा फेवर करेगी। नेक्स्ट थिंग इज द साइज ऑफ सब्सटेंसेस और द सोल्यूट पार्टिकल। जितनी ज़्यादा साइज रहेगी सोल्यूट पार्टिकल की उतना डिफ्यूजन स्लो होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्पीक अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थैंक यू।